Bismillahirrahmanirrahim. Welcome, Guidance and Counseling by Rana Ali. YouTube channel at the rate Runner4563. My dear students, viewers, and all the people who are listening to me and they view my lecture on YouTube. Today again, a lecture is on science subject. The syllabus which is meant for cadet colleges anti-test preparation. Today we will talk chapter 7. Chapter 7 of science book. This chapter is very important again, keeping in view the anti-test of cadet colleges, particularly those cadet colleges which are on the panel of ISSB, and those who wish to get admission in these colleges, they must prepare themselves fully in all the subjects meant for anti-test, and particularly more focus on science subject. No doubt the syllabus which is taken for cadet colleges anti-test, it's the syllabus from book 7 are almost the students who are studying in class 7, they may appear for this test, or those who are having age 11 and a half to 14 and a half, between this range they can apply for this, and currently they are studying in class 7. So the syllabus which is meant for anti-test, it's also from the same level. If we talk about the science subject, so it is the book which is of class 7 level, and it's from Punjab textbook board. So all the chapters are very important, but there are certain things which are ever considered for the paper of science under cadet colleges. So one of them, the most important chapter, is the 7. It's about certain gases. My dear students, Allah Almighty is the creator of this universe. And remember, in the previous chapter we have talked about the elements, definition, various elements, their percentage. So as Allah Almighty has created this universe, Allah Almighty is the creator of this universe. And remember, the basic elements for this creation are these elements. Among those elements, the important one, which are even the important for anti-test under cadet colleges, so those elements which we will discuss under this chapter are the oxygen, hydrogen, carbon dioxide, nitrogen, etc. My dear students, oxygen is very important. If we consider by volume the percentage of oxygen existing on this earth crust, or in seas, oceans, or water, so it's by volume percentage of oxygen is 21%. And if you consider by weight, whatsoever the total number of elements existing in this universe, if you consider by weight, this oxygen is 50% of the weight of all the elements existing in this universe. It's so important.
Without oxygen, no life is possible on this earth crust. Neither human beings nor an animal may survive on this earth crust. No plants can survive in this earth crust without oxygen. Oxygen is so important. It plays so vital role in the respiration. Very important thing. And remember, without oxygen, you can see so many patients which go in the ocean of death due to lack of oxygen. If oxygen is not available to them, or some malfunctioning happening in their respiratory system, or in this respiration process, so certainly no survival is possible. So very important role of this oxygen. So all the students are advised to at least go through the whole properties, importance of oxygen, carbon dioxide, hydrogen and nitrogen. So we discuss this oxygen. It's very important how this oxygen can be prepared in artificial way in the laboratory, how it is possible. It is possible. It is possible. Oxygen can be prepared in the laboratory by heating red mercuric oxide. Red mercuric oxide, if it is heated, so what will be production on the product side? So definitely will be oxygen and mercury. So it can be prepared even in artificial way by heating potassium chlorate in the presence of manganese dioxide. So by heating this potassium chlorate in presence of manganese dioxide, again we can get this oxygen on the as a product along with the production of the potassium chloride. Then questions can be given related to the characteristics or properties of the oxygen. My dear students, almost all the gases are colorless, tasteless. So similar happens with the oxygen also. It is colorless, tasteless and odorless. Odorless mean having no smell. जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं वो बेशक उर्दू में इसको याद कर लें कि इसका कोई जायका नहीं है, इसकी कोई स्मेल नहीं है, बदबू नहीं है, या इसका कोई रंग नहीं है. It has no color, no odor or no taste. Another important thing, oxygen itself is not combustible. खुद ये नहीं जलती, जलने में हेल्प करती है. For those students who are studying in Urdu medium system, ऑक्सीजन के बारे में ये आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें. ये खुद कंबस्टेबल नहीं है. कंबस्चन, जलने का जो प्रोसेस है, इट्स नॉट कंबस्टेबल बट इट हेल्प्स इन कंबस्चन. जो प्रोसेस है जलने का, जैसे आग जल रही होती है या इस किस्म का जो भी प्रोसेस है, उसमें ये हेल्प कर रही होती है. जब भी जो आग कहीं पे लगी जाए आउट ऑफ कंट्रोल और वो ख़तरा होता है कि ये ज़्यादा नुकसान करेगी, तो वहाँ पे पहले तो ये देखा जाता है कि वो आग है किस किस्म की है.
जो वहाँ पे जो सेफ्टी वाले लोग होते हैं, दे अंडरस्टैंड दिस और फार्मूला, तो वो कोशिश करते हैं कि जो लवाजमात या चीज़ें जो बर्निंग में हेल्प कर रही होती हैं उनको दूर किया जाए। ऑक्सीजन को अगर वहाँ से हटा दिया जाए, उसकी सप्लाई को रोक दिया जाए, या किसी तरीके से उस एरिया में मतलब कि उस ऑक्सीजन की कमी कर दी जाए, या फिर जो मटेरियल जल रहा है उसको हटा दिया जाए, या जो हीट है उसको ख़त्म कर दिया जाए, तो कोई न एक तरीका उनमें से एक ये है कि ऑक्सीजन को अगर, जैसे वो कहते हैं कि एक इंसान को अगर वो आग लग जाती है तो फ़ौरन एक बड़ा मोटा कंबल लेकर फ़ौरन उसको ढाँप दिया जाए, तो उससे ये होगा कि वो, ऐसा होता है कि ये जो फायर सेफ्टी वाले हैं ये अक्सर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, एंड दिस एक्सपेरिमेंट आई हैव सीन इन मिल एंड फैक्ट्री एरिया आल्सो, they do this experiment in gathering so that other may come to know how we can get safety from the fire. If it gets out of control, how we can get the safety of the things, personal equipment. So one of them is the reducing the supply of oxygen in that area. अगर वहाँ पे कोई ऐसा शक्कर है जो शक कर रहा है उसको, या कोई ऑक्सीजन की वहाँ पे आप कमी कर रहे हैं, तो इट मीन इट्स नॉट combustible but it helps in combustion. Similar case happens. It is not only soluble in water, rather it is sparingly soluble. sparingly soluble का मतलब कि बहुत ज़्यादा ये उसमें डिज़ोल्व होती है वाटर के अंदर। अगर ये ना sparingly soluble हो, डिज़ोल्व ना हो, तो जो आपकी एक्वेटिक लाइफ है, जो पानी के अंदर ज़िंदगी है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की लिविंग थिंग्स हैं, तो उनकी सर्वाइवल मुश्किल हो जाती है कि ऑक्सीजन के बगैर कोई भी चीज़ ज़िंदा नहीं रह सकती। जिसका नाम लाइफ है उसके लिए जो ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। इवन जो पौधे वो भी रिस्पायर करते हैं, उनका भी जो प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को ही यूज़ करते हैं। वो तो ठीक है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनती है। वही जो ऑक्सीजन है वो पौधे भी यूज़ करते हैं, ह्यूमन बीइंग भी यूज़ करते हैं, बाकी जो एनिमल है वो भी उसको यूज़ करते हैं। सिमिलर केस हैपन्स कि इफ़ यू want to test whether something is acid or base by using the litmus paper, whether it is red or blue, it does not have any effect on red or blue litmus paper. वो पेपर है जो कि टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है कि either something is acidic or basic in nature, तेज़ाब है या असास है, फॉर उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स। जो ऑक्सीजन है इसका इस पेपर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं, इट हैज़ नो इफेक्ट एट ऑल। और अब हम इसके रिएक्शन की बात करते हैं। इट रिएक्ट्स विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड इट प्रोड्यूसेस वेरियस ऑक्साइड्स। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके जो यूजेस हैं, यूज़ ऑफ ऑक्सीजन गैस, आई थिंक मोस्ट ऑफ you are familiar and acquainted with the usage and uses of the oxygen. You might have seen so many flyers who fly the jets or divers. They take oxygen cylinder with them for their respiration, and we breathe in this oxygen. Plants need for their respiration. All the animals need this oxygen for their survival. Then liquid oxygen is also used as a fuel in so many spaceships. Then for removal of impurities from metallurgy of iron, the process which is used to remove impurities from the iron, it is metallurgy of the iron. So it is used for this purpose also. Then it is used for producing high flame during welding process. ये तो अक्सर आपने देखा होगा जब वेल्डिंग हो रही होती है तो
ऑक्सी फ्लेम वो यूज़ हो रहा था, इसलिए वो जो राड है वो मेल्ट हो के जो एक चीज़ है टूटी हुई उसके वो क्रैक्स को फिल कर रहा होता है। इस तरीके से वो चीज़ आज जुड़ जाती है जो लोहे की बनी हुई है, उसको जॉइंट करने के लिए, कंबाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए, पक्का करने के लिए वो जो क्रैक है उसमें ये वेल्डिंग का प्रोसेस यूज़ होता है। माय डियर स्टूडेंट, सो मेनी अदर uses of the oxygen also. We will continue this chapter to cover the whole syllabus which is meant for cadet colleges under this chapter. So I hope you might have enjoyed today's lecture and got maximum information regarding this chapter. It's important chapter. Do prepare this chapter for cadet college entry test. Wishing you good luck. Thank you to all.